अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इफ m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब एंड m is equal to 2 and n is equal to 4, find m when n is equal to 6 and n when m is equal to 432. So students, what will we do? सिंपली हमारे पास रिलेशन गिवन है, m जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n क्यूब। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, m इज इक्वल टू के ओवर n क्यूब। k की वैल्यू फाइंड करेंगे, k इज इक्वल टू एम एन क्यूब। सो m गिवन है हमारे पास 2 इंटू एन कितना है 4 क्यूब। सो 64, so we get 128. k is equal to 128. We have find the value of k, which is 128. Now put it in this, we get m is equal to 128 over n cube. We use this relation for further solving. Next is we have to find value of m when n is equal to this. So we use m is equal to 128 over n cube. m फाइंड करना है, n कितना गिवन है हमें 6 क्यूब। सो विच इज इक्वल टू 128 over 216। कट ऑफ करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 16 over 27. सो वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच इज इक्वल टू 16 over 27. Next we have to find value of n when m is equal to 432. So what will we do? We use m is equal to k over n cube relation. M is equal to k, we have find already 128 over n cube. N we have to find, so we separate it, 128 over m, and m is given 432, 128 over 432. So which is equal to 8 over 27. कट ऑफ करेंगे, सो n क्यूब इज इक्वल टू 8 over 27. Now we have to find the value of n, not n cube, so we take cube root on both sides. Cut off, so n is equal to 2 over 3. So we have find the value of n over n, which is 2 by 3. So क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका हमारा कंप्लीट। एक्सरसाइज 3.2 भी हो चुका है कंप्लीट। होपफुली एक्सरसाइज को समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।